Okay, so we started alcohols in the last class, and today we are talking about something like physical properties of alcohol. So let's start about physical properties of alcohol. Physical properties of alcohol. Right. So the very first physical property of alcohol is that alcohol are soluble in water. They are soluble in water. So you need to keep remember that alcohol are soluble in water. And you must need to remember the thing that why they are soluble in water. Why they are soluble in water. Because the reason is they can form hydrogen bond with water molecule, right? They can form hydrogen bond with water molecule. That is why they are soluble in water. Right, let's see how can they do this. ये किस तरह कर सकते हैं ऐसा? So let's talk about ethanol. For suppose if you talk about ethanol, so this is ethanol, one carbon, second carbon, this carbon is connected with O and hydrogen, and then hydrogen, 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 and this hydrogen, right? We know that the electronegativity of oxygen is very much higher, and it has lone pair as well, so it is partial negative, and this is hydrogen, which is partial positive, right? So when these two are like this, so the water molecules present along with this, it will be like hydrogen positive and water molecule like this, right? So this positive start attracting towards the negative of alcohol. So this is what hydrogen bonding you need to see over there. And also for suppose we have another water molecule having oxygen over there. So oxygen water molecule is partial negative. So there will be a bonding of oxygen with this hydrogen as well. So you can say that in the alcohol molecules and water molecules, they have opposite charges that they can attract each other and form hydrogen bond, and that's why they are soluble in water. So one of the reason of any substance to be dissolved in water is actually the hydrogen bonding. So alcohol can be soluble in water because it can form hydrogen bonds with the water molecules. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. But you need to remember one more thing over here. The very important thing is, that is a note for you, solubility decreases. Solubility decreases as the number of carbon increases in the chain. As the number of carbon increases in the chain. You must need to remember this. जब number of carbon increase होंगे in the chain, so that the solubility in water is going to be decreases. ऐसे कि अगर आप बोलें, अगर मैं आपसे पूछूं which one is more soluble in water, ethanol or hexanol? So you can say that ethanol is more soluble in water and this is less soluble in water, right, बच्चों? Right. And Yeah. if you want to know the reason of this, so you can say that this is all about long hydrocarbon trail. It's all about long hydrocarbon trail or tail, sorry, that disturb, or you can say that actually disrupt the effectiveness of hydrogen bonding, right? ये जो आपके पास लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन होती है, या ये आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, तो इन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के अंदर जो होते हैं आपके पास क्या होता है, आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल होती है। तो इंड्यूस्ड डायपोल जो होती है वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्या जाती है, ओवरकम कर जाती है। दैट इज व्हाई वो इंड्यूस्ड डायपोल की वजह से वो पानी के अंदर उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। So you can say that the long hydrocarbon tail is actually disrupts the effectiveness of hydrogen bonding, the effectiveness of hydrogen bonding. Yes, Bacho, is that clear? This point is clear or not?
right? Ji. Okay, so the second point is that alcohols have higher boiling points than alkanes, right? Alcohol के पास आपके पास boiling point थोड़ा सा ज्यादा होता है as compared to alkanes. So you can say that alcohols have higher melting and boiling point. I'm writing boiling point over here first because they are in liquid state. So you can say that alcohols have higher boiling point than alkanes. And what's the reason behind this? Again, the reason is same. There are induced dipoles, and along with the induced dipoles, they have hydrogen bonding within their molecules as well. वो आपस में भी hydrogen bonding कर लेते हैं, इसकी वजह से उनका melting boiling point increase हो जाता है. Likewise, for suppose आपके पास एक ethanol है, there's a CH3 CH2 OH. For suppose this is what ethanol you have, and this is the another ethanol you have, right? We have two ethanol molecules over here. So you can see this, that over here, this is partial positive and this is partial negative. So within a alcohol, there is hydrogen bonding as well, right? For suppose you have another molecule over here, alcohol का एक और molecule आपके पास इस तरह से है. So there will be partial negative and partial positive attraction over here. So within alcohol, वहां पर भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. वो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं. जब मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो साथ साथ जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंड्यूस्ड डायपोल है उसके साथ साथ इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्केन ज्यादा होता है. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. So you can say that it is all about because of the presence of intermolecular hydrogen bonding. This is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के साथ बना रहे हैं जो है सॉलिबिलिटी की वजह बन रही है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये किसके साथ बना रहे हैं? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर हो रहा है. अलोंग विद वैंडर वॉल फोर्सेस. वैंडर वॉल फोर्सेस अलग हैं, ठीक है ना, जो इनके अंदर मौजूद हैं. वो वैंडर वॉल फोर्सेस कौन सी हैं? वो वैंडर वॉल फोर्सेस यहाँ पे पास इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है ना. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. देखिए, एक तो रीजन ये होता है आपके पास क्या नाम है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का, कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, एक आपके पास अभी जो मैंने दिखाई वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी. दूसरी आपको याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इंड्यूस्ड डायपोल होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर बच्चों? वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. सो यू कैन इवन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बिकॉज व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देयर विल बी more electrons, hence there will be more induced dipole, then we required more energy to overcome, right? So you can even say that the one more reason is that when number of carbon increases, more electrons increases. When the more electrons increases, there will be more induced dipole over there. When the more induced dipole over there, we required greater energy to overcome. Then required greater energy to overcome. Is that clear, every one of you? So these are the reasons that you need to keep remember. इसमें से कोई सा भी reason देंगे that will be acceptable in exam, right? Yes, every one of you. Yes, sir. Okay, then let's move towards some important reactions of alcohol. So alcohol के बहुत सारे reactions में से एक या दो reactions आप already पढ़ चुके हैं, जो कि एक formation था और एक आपके पास elimination था, ठीक है ना. और एक आपके पास nucleophilic substitution से भी formation था, वो भी आप पढ़ चुके हैं. एक electrophilic से आपके पास formation था, वो भी आप पढ़ चुके हैं. तीन reaction आप almost पढ़ चुके हैं इसके. Now we are moving towards some other reactions of alcohol. So let's start
the reaction, or you can say that chemical properties of alcohol. Chemical properties of alcohol, right? In chemical properties, you just need to keep remember the very first chemical property of alcohol is that they can be used as fuel, right? The very first chemical property is combustion, right? So you can say that alcohols can be combusted in the presence of air, right? Or they will produce what? Carbon dioxide and water. Again, same product that we were having in alkanes and in alkenes. Alkanes की combustion में भी carbon dioxide और water आ रहा था, alkenes की भी combustion में carbon dioxide और water ही आ रहा था, और alcohol में भी यही situation है. If you remember my words over there, मैंने आपको बताया था कि for suppose आपके पास कोई भी substance हो जो कि combust हो रहा हो, कोई भी substance, whatever the substance, जो भी substance हो वो जो combust होगा, तो उस substance के अंदर जो elements होंगे, उन elements के ऑक्सीजन के साथ इंडिविजुअल कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है ना? सो यू कैन सी दिस इन अल्कोहल एज वेल, वी जस्ट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन ओवर देयर. सो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना सकता है. So this will be the product in alcohol combustion as well. This is why you can say that the one of the use of alcohol is it can be used as an alternate fuel. It can be used as an alternate fuel. This is one of the use of the alcohol, right? Now the balancing matters. You need to keep remember first hydrogen, then first carbon, then hydrogen, and then oxygen. So right now the carbon is 1, it's already balanced, and the hydrogen are 4. So we need to write 2 over here. Now the hydrogen is balanced, but you need to see the oxygen. There is a balancing in oxygen. It is a little bit different. You can see this, we have 2 oxygen over here and 2 over here. So total on the right hand side, we have 4 oxygens. But when you talk about the balancing on the left hand side, so we already 1 over here. So हमें 3 balance करने हैं. So it should be 3 over 2, right? So in this way, you can balance your oxygen on the left hand side. One more time, just look at over here. If you talk about C2H5OH, bacho, so when you combust this in the presence of oxygen, it will form what? Carbon dioxide and water. As you have 2 carbons on the left hand side, so you can write 2 over here. You have 6 hydrogens on the left hand side, so you can write 3 over here, right? So now carbon and hydrogen are balanced. How can we balance oxygen? Just look at over here. 2 2s are 4, 3 1s are 3. So right now we have 7 oxygens on the right hand side. If you balance over here, so 1 is already in the alcohol. We just need to write 3 over here. 3 2s are 6 plus 1, 7. This is balanced now, right, bacho, or not? Yes. Okay, तो जल्दी से मुझे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल की कंबशन करके दिखा दीजिए. जल्दी से प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल की कंबशन करके मुझे दिखाएं और मुझे उसकी बैलेंस इक्वेशन लिख के सेंड कीजिए. जस्ट डू इट क्विक. चुके हैं. So second chemical property बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके, that was actually elimination reaction, जो कि आपने पहले पढ़ी है. Let's have a review on that again. Elimination reaction. If you talk about elimination reaction, bachcho, so it's actually a type of reaction in which you are going to eliminate the water molecule to make alkenes, right? So this is chemical property number 2, elimination reaction. And also you can call this reaction as dehydration reaction, and because the water molecule is going to be eliminated from here, right? So let's see, if you have C2H5OH, this is alcohol, and if you heat this in the presence of concentrated sulfuric acid at 200 degrees Celsius temperature, or if you're using ammonium oxide in the presence of 350 degrees Celsius temperature, so definitely it is going to remove water molecule and will give you ethene. So you can say that ethanol से ethene बनाने का ये तरीका है आपके पास, right? And you must need to keep remember the thing that if you want to remove OH from the carbon, so its consecutive carbon should have 1 individual H. You must need to remember this thing, that if you want to remove
you want to remove OH from carbon, so the consecutive carbon should have individual H. This is the very important thing for the removal. अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपके पास रिमूवल मुश्किल हो जाता है. फॉर सपोज आपके पास है ये कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन्स, राइट, लाइक दिस. यहाँ पर अगर आपके पास क्या लगा हुआ है, OH, और आप चाहते हैं कि ये OH रिमूव हो जाए, तो ये वाले कार्बन पर इन तीनों बॉन्ड में से ये दोनों कार्बन जो इस तरफ राइट हैंड पर है या जो लेफ्ट हैंड पर है, इन दोनों ही कार्बन में से किसी एक पर आपके पास क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल हाइड्रोजन होना चाहिए. फॉर सपोज मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं, यहाँ क्लोरीन लगा दूं, यहाँ क्लोरीन लगा दूं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन. तो बताएं बच्चों, क्या ये रिमूव हो सकता है हाइड्रोक्सिल? यस, एवरी वन ऑफ यू. नाउ नहीं. कैन आई दिस? हो सकता है? नहीं हो सकता. देखें, मैंने आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप ये पढ़ लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट इफ यू वांट टू रिमूव हाइड्रोक्सिल फ्रॉम एनी कार्बन, सो उसका जो कंसेक्यूटिव कार्बन होना चाहिए उसके पास इंडिविजुअल H होना चाहिए. सो यू नीड टू सी every molecule very clearly. You can see this, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है. तो अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूं तो शायद आपके समझ में आए कि ये इस तरह से लिखा हुआ है ना. So if you want to remove hydroxyl from this carbon, so इसका जो consecutive carbon है उस पे individual H तीन लगे हुए हैं, है ना. तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक रिमूव कर लें, आपके पास बन सकता है. देखें, ये वाले कार्बन को कुछ नहीं हो रहा है, इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, बट इसका OH रिमूव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है इस तरह से, और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है कि अगर आप इसको कंडीशन दें, कौन सी, concentrated sulfuric acid at the rate 200 degrees Celsius temperature. Is that clear, every one of you? So we need to see every molecule very clearly. अगर हम उसको नहीं देखेंगे properly तो फिर हम आंसर नहीं कर पाएंगे. बहुत से क्वेश्चंस में आपसे वो एग्जामिनर छेड़छाड़ कर सकता है. तो you need to see every molecule very clearly. Yes, every one of you? Is that clear? Yes, sir. चलें, एक मॉलिक्यूल में आपको देता हूं, आप बना के दिखाएं कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप इसके बना सकते हैं. लेट्स सी. फॉर सपोज आपके पास एक कार्बन है जिसके ऊपर OH लगा हुआ है लाइक दिस, एंड दिस इज, चलें एक कार्बन और लगा देते हैं, यहाँ पर एक कार्बन और लगा देते हैं. दिस इज CH3, दिस इज H, CH3, and over here we have Br, H, CH3, we have Br, and we have chlorine, right? So let's draw how much possible structures are there if you give them aluminum oxide with 350 degrees Celsius temperature. तो जरा मुझे बना के दिखाएं कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप इसके बना सकते हैं, कि सर इतने पॉसिबल, इतनी जगह पर डबल बॉन्ड आ सकता है हट कर. So let's try.